Okay. ओके मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ एक्चुअली लाइट चली गई, इसका वो वाईफाई कट गया, अब मैंने हॉटस्पॉट से जोड़ दिया। सो व्हाट हैपेंड, हम क्या कर रहे थे, लेट्स होप। अच्छा मेरा मैप था ये, लेट्स सी ये कैसे अटक गया। ओके सो मेरा मैप था f फ्रॉम x स्टार y टू, तो मैं दिखा चुका हूँ सारा एक्सेप्ट फॉर एक चीज। So this was y star, it was given by x star plus y perp is equal to x star restricted to y. तो मैं सब दिखा चुका हूँ। I have shown further that x star plus y perp is less than equal to f of x star plus y perp for all मतलब for all x star y plus, ये तो मैं कर चुका हूँ, belonging to x star by y perp। तो ये तो हो गया, तो लेकिन मुझे दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे इक्वालिटी दिखानी है। नाउ टू शो दैट x star plus y perp is equal to norm of f of x star plus y perp which is equal to norm of x star restricted to y, whatever जो भी है। so हमें क्या दिखाना है, एक्चुअली वो था x star y star जो भी है। So अगर मुझे ये दिखाना है तो I have to show that, क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ this is less than or equal to, मुझे दिखाना है less than नहीं हो सकता। तो assume to the contrary, let's see x star plus y perp in norm is strictly less than norm of x star restricted to y. So it implies that supremum, पहले इसको करते हैं, it implies that x star infimum over y star belonging to y star, what do I have, x star plus y star in norm, तो मैं गलत लिख गया, ये होता है ना, y perp is less than, is strictly less than norm of x star restricted to y. But when I restrict x star to y and y star belongs to this, so let me see. Okay. अगर ये लेस देन y है, इसका इन्फिमम सबसे छोटा वाला इससे लेस है, तो इन्फिमम की डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं शायद। इसका मतलब ये है, चलो इस पोर्शन को हम ऐसे ही रखते हैं, ये टाइम यहाँ वेस्ट करेगा। लेट मी प्रूव बी और इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम लेगा। इसको मैं कल दिखाऊंगा, छोटा सा है कि हमें दिखाना है, वो इसके लेस नहीं हो सकता। सो बी पार्ट जो है वो ये था, x by y star, ये टाइम लेगा, is isometrically isomorphic to annihilator of y. So that should be rather easy. Now proof इसका, for x star, या अब डिफाइन करते हैं मैप, जैसे कि इससे पहले हमने किया था। Define f from x by y to k by f of x plus y is equal to x star at x. ठीक है ना, where x star belongs to annihilator of y. So of course this is a scalar. If x star belongs to annihilator of y, it is contained inside x star, so its range is the scalar field. So this is a well-defined map. And if it is also
वेल डिफाइंड हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब वेल डिफाइंड इन द सेंस कि इट लिव्स इनसाइड के, एंड फर्दरमोर इट्स अ वेल डिफाइंड मैप बाय x1 plus y अगर बराबर है x2 plus yk. This is true if and only if x1 minus x2 belongs to y, which is true if and only if x1 x star at x1 minus x2 is equal to 0 for all x star belonging to y perp, which would be true if x star at x1 is equal to x star at x2, so which is the same thing as f of x1 plus y is equal to f of x2 plus y. Okay, so this is a well-defined map. So it implies that f is well defined. Actually, it also means that it's 1, 1, but that's not. And linear. Again, linear तुम straightforward है, कुछ check कर सकते हो. Now, given x plus y belonging to x by y, we can find a sequence yn contained in y such that norm of x plus yn goes to norm of x plus capital Y. उसकी वजह ये है जो हमने अभी किया था, अभी इसी के साथ है, it is infimum, so therefore it's a limit point and you can find a sequence inside the set Y such that this converges to this. Now, just because it is the infimum of these real numbers, so you can find the limit point. Infimum means limit point, therefore every infimum is a limit point, so therefore you can find a sequence that converges to this because we are living inside a metric space. Okay, now for x star belonging to y perp, x star at yn is equal to 0 for all n greater than equal to 1 because of course they lie inside y. Annihilator में होने का मतलब ये सारे y को vanish करता है. So f of x plus capital Y in mod, which by my definition is actually x star at x, I can write it as x star at x plus yn, क्योंकि yn को तो ये kill करता है. Now since it's a bounded linear functional, this is less than equal to norm of x star into norm of x plus yn, and you let this is true for all n, so letting n approach infinity, I would get f of x plus y is less than equal to norm of x star plus norm of x plus capital Y, क्योंकि इन्हीं का लिमिट है इस सीक्वेंस का. तो विच पहली बात तो ये है कि इसका मतलब f is bounded linear operator, यानी f belongs to x by y का star and norm of f is less than equal to, मतलब it's straightforward, क्योंकि norm of f जो होता है वो होता है सबसे छोटा वाला नंबर जो यहाँ पे फिट हो, तो therefore it must be less than equal to x star. Let's call this 1. On the other hand, x star at x is equal to f of x plus y in modulus, which is less than equal to norm of f into norm of x plus y. Now this is less than equal to norm of f into norm of x, because again this is infimum, so you have to have this infimum of norm of x plus this small y, y belongs to y, should be always less than equal to norm of x. Why? Because y में 0 भी है, तो इसका एक member norm x भी है इस set का जिसका हम infimum ले रहे हैं, तो infimum is less than equal to, it's a lower bound to any member of the set. So this is infimum, this is a member of the set, so it should be less than equal to this. So which implies that x star in norm is less than equal to norm of f. कहने का मतलब अगर मैं इसको डबल स्टार मान लूं, by star and double star I have
norm of x star is equal to norm of f. तो कहने का मतलब for every f belonging to, कहाँ गया मेरा, oh shit, for every x star belonging to y perp, there exists an f belonging to x by y star, y perp, मैं क्या कर रहा हूँ, perp और star को mix कर रहा हूँ, okay, star such that norm of x star is equal to norm of f. तो इतना मैं कर चुका हूँ. Now we define, अब हम इनको एक मैप के साथ जोड़ते हैं because ये मैप फिर आइसोमेट्री होगा. So define f from y perp to x by y का star using the same thing. And I have got f of x star is equal to f where f और जो इसका रिलेशन है is equal to x star. मतलब ऐसे ही किया था ना हमने, no sorry, x star at x हमने लिया था. Well, this is the connection between f and x star and we map them under this map. Then clearly ये तुम खुद कर सकते हो, f is a linear isometry. Isometry actually हम prove कर चुके हैं, ये है ना, तो linear straightforward है, तो ये isometry है, so it's a linear isometry. Or isometry is always 1-to-1, so we just have to show that f is onto, and we are done. Now, so if to show that f is onto, this capital F is onto, define x star from x to k. अगर मैं reverse मतलब इस तरह से जैसे हमने अभी किया था, x star at x is equal to f of x plus y for all x. अब हमने मैंने इसका उल्टा रास्ता किया, मैंने x star को इसकी मदद से डिफाइन किया, पहले मैंने f को इसकी मदद से डिफाइन किया था. मैं कह रहा हूँ मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, उससे मुझे मिलेगा f is onto, मतलब दूसरी डायरेक्शन से भी ये पॉसिबल है, preserving the structure. Then obviously x star is linear. Why? Because f is linear. मेरी यहाँ पे भूल गया, let f belong to x by y का star. ठीक, मैंने इसको तो अगर मैं x star को ऐसे डिफाइन करता हूँ, then x star is linear and norm of x star at, let me take modulus of x star at x is equal to f of x plus y is less than equal to norm of x plus y, and you know that ऐसे हम बहुत पहले कर चुके हैं, this is norm of f into norm of x, which implies that पहली बात तो ये कि x star belongs to x star because it means that it is bounded less than equal to k, such that साथ में ये भी है x star at y is equal to f of y plus y, which is equal to f of y, which is equal to 0 for all y belonging to y. ठीक है ना? Because y plus y is equal to y for all y belongs to y, and y is the additive identity of a vector space, and under the linear map it must go to 0. So it implies that then this x star belongs to y perp. So therefore, for each x star belonging to, for each f belonging to x by y the star, there exists x star belonging to y perp such that f of x star is equal to f perp, and which implies that f is onto, and hence
जो हमें चाहिए था, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा क्योंकि वहां वो थोड़ा अटक गया था। x by y is isometrically isomorphic to y. Okay, let's stop it now. ठीक है, तो कितने आए हैं? 27 प्रेजेंट है। ओके, लेट मी एंड दिस। ओके, वैसे भी 11-17 तुम्हारी दूसरी क्लास भी हो।